Hey everyone, myself Professor Saurabh Shah from Mumbai, and here in this video we'll be discussing next part of our Chalisa series. So let's see. Mr. K visited Messrs. Makrana Marbles for the purchase of marble and tiles for his newly built house. He asked the owner of the above shop, that is Makrana Marbles, Mr. J, Makrana Marbles के owner कौन थे? J, to visit his house prior to supply so that he can clearly ascertain and correct mix and measurement of marble and tiles. बहुत सही किया के ने, राइट. उसने बोला सेलर को कि आप आके पहले रिक्वायरमेंट चेक कर लो कि मेरे घर पे कि किस तरह का मार्बल और टाइल्स मेरे घर के लिए फिट है. Now, Mr. J agreed and visited the house on the next day. He inspected the rooms in the first floor and the car parking space. First floor के rooms और car parking का space उन्होंने check किया. Mr. K insisted him to visit second floor as well because the construction pattern was different. मिस्टर जे इग्नोर द अबव सजेशन. सर तो सेलर जो है उसने बायर के सजेशन को इग्नोर किया, उसने बायर के सेकंड फ्लोर को चेक करने नहीं गया. फर्स्ट फ्लोर को चेक किया, पार्किंग को चेक किया, सेकंड फ्लोर को चेक नहीं किया. नाउ Mr. J supplied 146 blocks of marble as per the size for the room and 16 boxes of tiles with a word of caution that the tiles can bear only a reasonable weight. Marbles and tiles were successfully laid except on the second floor due to different size of the marble. The tiles fitted in the parking space also got damaged due to the weight of the vehicle came for unloading cement bag. Now, Mr. K asked Mr. J for the replacement of marble which did not fit at the second floor and tiles, to which Mr. J refused, taking the plea that the marble was were as per the measurement and it was unsafe for to fit tile at the parking area as it cannot take heavy loads. Discussed in the light of provision of Sale of Goods Act 1930, can Mr. J refuse to replace the marble with reference to Doctrine of Cavite Emperor? Also, whether the replacement of damaged tile be imposed on Mrs. Makrana marbles. सो हमें ये प्रोविजंस बड़ी क्लियर है. देखो यहाँ पे सेलर इज नॉट लाइबल टू नो द और सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू नो द पर्पस फॉर विच बायर नीड्स द गुड, राइट. सेलर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बायर का पर्पस को जाने, राइट. बट जब बायर ने स्पेसिफिकली अपना पर्पस बता दिया है या फिर बायर ने सेलर के स्किल्स एंड जजमेंट पे रिलाई किया है, इन दैट सिचुएशन सेलर वुड बी रिस्पॉन्सिबल, राइट. सो अब यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले फॉर मार्बल, बायर ने सेलर के स्किल्स पर रिलाई किया एंड सेलर को अपना पर्पस भी बता दिया. सेलर की ड्यूटी थी उसके बाद कि सेलर आके सेकंड फ्लोर को भी चेक करे, राइट. सेलर ने आके सेकंड फ्लोर को चेक नहीं किया एंड सेकंड फ्लोर के मार्बल अनफिट निकले, सेकंड फ्लोर के मार्बल वहां पे फिट नहीं हुए. तो यस, मार्बल्स का रिप्लेसमेंट तो सेलर को देना पड़ेगा. अब करें टाइल्स की बात. सेलर ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ये टाइल्स एक रीजनेबल वेट बेयर करेगा, उसके बाद भी आपने उसके ऊपर हैवी व्हीकल चढ़ाया. इसमें अब सेलर की गलती नहीं, सेलर टाइल्स के लॉस को बेयर नहीं करेगा, सेलर टाइल्स को रिप्लेस करके नहीं देगा. सो देखते हैं. सॉरी, देखो, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्परर, the buyer cannot hold the seller responsible for defect in the goods supplied, as it is the duty of the buyer to make a proper selection or choice of the goods. It also provides that there is no implied condition as to quality or fitness of the goods sold for any particular purpose, right? However, इसका एक exception है क्या कि buyer had made known to the seller the purpose for his purchase and or relied on the seller's skill or judgment, and seller's business is to supply goods of that description, then it shall be the duty of the seller to supply such goods as are reasonably fit for the purpose, right? So यहाँ पे यही हुआ है. Mr. K has made known to Mr. J the purpose for his purchase and relied on his skill and judgment. Then it was duty of Mr. J to supply the marbles fit for that purpose, including the second floor. Since the marbles supplied were not fit for the second floor, Mr. J is liable to replace the marble to the extent not fit for that purpose, right? अब Mr. K यानी buyer की ड्यूटी क्या है? It was the duty of the buyer to make known to the seller the purpose for his purchase of marbles, and उसने fully perform किया अपना ड्यूटी by arranging seller's visit to his site. Now, duty of Mr. J, the seller, is that goods supplied shall be reasonably fit for the purpose for which the buyer wants them. अगर सेलर ने अगर बायर ने मिस्टर के यानी बायर ने रिलाई किया सेलर के स्किल जजमेंट पे, तो एंड सेलर हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी by neglecting the request to visit second floor, resulting in supplies of unfit marble for the purpose of Mr. K.
So, considering the above provision, Mr. J will be liable to replace the marbles not fit for second floor, as Mr. J is bound to the implied condition to supply the marbles as per the requirements of Mr. J when he has made him known about that and relied on his skill and judgment. Right? अब बात करते हैं टाइप. So, according to doctrine of caveat emptor, it is duty of the buyer to satisfy himself before buying the goods that the good will serve for the purpose for which they were being bought. यहाँ पे मिस्टर जे ने सप्लाई किए boxes of tiles with a word of caution that tile can bear only a reasonable weight. Even though the tiles were laid in the car parking space, Mr. K got damaged later because of the vehicle used for loading of cement bag were beyond the reasonable weight. Hence, the seller, that is Mrs. Makrana Marble, is not liable as the buyer, Mr. K, as before laying out tiles, he has satisfied himself that tiles will serve the specific purpose. So यहाँ पे since उसने पहले से ही बताया कि पार्किंग ये रीजनेबल वेट ही ले सकता है एंड उसने दैट मीन्स बायर ने सेलर से पूछा नहीं कि पार्किंग स्पेस के लिए यूज हो पाएगा क्या, इसलिए यहाँ पे टाइल्स का रिप्लेसमेंट करने के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. राइट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय. टेक केयर. जय जिनेंद्र.